हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हर वो बेहतरीन एचआर स्टार को, हर वो बेहतरीन एफएम स्टार्स को जो काम तो दिन रात कर रहे हैं, बट उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनको कोई उनकी इज्जत तो अच्छी बात है, बट उन्हें कितने लोग जानते हैं। तो मेरा ये मिशन में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया निमी। Perfect, Nimi. So tell me more about your life. आप अपने लाइफ में एक अचीवमेंट ले चुके हैं और बहुत यंगस्टर्स आपसे प्रेरणा लेते हैं, एक प्रेरणा स्रोत हो आप उनकी, राइट? तो आपकी लाइफ में आपने इतना कुछ कैसे अचीव किया, और जो भी यंगस्टर्स है वो आपसे क्या सीखे, प्लस आपने अपनी लाइफ में चैलेंजेस भी सहा होगा, लोगों के ताने भी सुने होंगे, तो आपने उस समय अपने आप को मजबूत कैसे रखा? Over to you, Nimi. Your time. Okay, thank you. So, of course, my journey also started like anyone else, The only difference what I had was I have done my schooling across the country. So that's the beginning moment. कहते हैं ना कि कहीं पे it starts a spark, but you don't realize it. Life gives you so many opportunities, but you don't realize it कब और कहाँ वो learnings बाद में आती है. So when my schoolings were in across all country, so for every 2 years I was in a new school because my parents were in defense army. So that's where it's all about KV and Army schools. And every new time, after every 2 years or 3 years, we were in a different school, meeting new people, getting adjusted, flexibility, adaptability. जो कि ये सारे terms हम आज use कर रहे हैं, I didn't know, it just came across. After that, when I did my graduation, and then, so since all these things, I was very inclined towards people behavior, the mindset. मुझे लोगों को समझना अच्छा लगता है, and I would always be curious to know why a person does the way they behave. So एक interest था ही psychology में. So, but then I don't know, but when I got to know about HR, so HR is a field जहाँ आपको you get the opportunity of being a learner, ठीक है? You are a facilitator and you are also an enabler. मैंने लगा wow, 3 चीजें, I get to do it. So that's where I started reading towards HR, and I got into MBA in HR, and that's how my journey started. And now it's 12 years I've been in HR across various industry segments. So whether it is from a recruitment consulting firm, healthcare BPO, freight forwarding industry, retail, and IT. So again, HR, it's a people person. People हर जगह रहते हैं, but the mindset changes. The way people behave in retail is different from an IT. And I'm so glad that I am able to work with all of them. I'm able to understand. I was able to understand what the psychology behind. So if not been HR, I would have been into psychologist. Wow. You know psychology is a very interesting subject जहाँ पे हम लोगों की बारे में बिना जाने समझ सकते हैं, मतलब बिना पूछे हम समझ सकते हैं कि exactly कैसा सोचता है, क्या है, not many things. Great Nemi. अच्छा, हम लोग की बातें भी हुई थी कॉल पे, and it was a great I would say a very immense depth discussion we had over a call and over messages as well from past so many days. But here I would want to understand from you, जैसे आपने बोला अभी, राइट, कि लोग साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट और लोग समझते हैं, तो यहाँ पे एचआर, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, एचआर आपके लिए वन शब्द में क्या है? दूसरा क्वेश्चन कि साइकोलॉजी हर एचआर कैसे समझे, या अपने व्यक्तित्व में या अपने प्रोफेशन में साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पढ़ाने से नहीं आता साइकोलॉजी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड until unless you do it. तो ये दोनों प्रश्न आपके ऊपर, so over to you, Nimi. Okay, so HR for me is purpose. Okay, super. So passion, find your passion, yes, and trying passion into purpose. That's what HR is. And secondly, जब आपने बोला कि वो psychology, how to understand about it, I said the only thing is be flexible and just meet, talking to people, understanding about them. So it's important that
as a profession, as an HR, when you are in a power or when you're in a position to give feedback, you should also be able to receive feedback. So that's one thing when you try to understand about the mindset of the people, because a person, if he's not, the way he's talking, it is not, might not be his nature. It is what his, probably the mindset at that point of time, or it could be that the way he has been brought up. So the until unless we get to know each other, so how we both got to know about each other, कि हमारी बातें हुई, messages में बात हुए, and that's why the rapport has been built. I mean, had it been you just call any of your guests, okay, 4 baje ka, this is the link, this is what it is, you are invited. That might not be the rapport. That might not be the, the interaction what we are going to we are having now. So it's all about how you take a step forward. Wow. I think being an HR and being a leader, you should always take a step forward and people should learn. और आपको अपने लोगों को अपने साथ लेके आगे बढ़ना है. बहुत उम्दा नहीं. I really love the way you say it and you always smile. How you maintain? I mean, अच्छा, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ जो मैंने उस समय भी पूछा था आपसे, कि हमें कितना जरूरी है अपने, चाहे जितना भी दुख हो, जितना भी समस्या हो अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, पर अपने संतुलन बनाए रखना वो कितना महत्वपूर्ण है. दूसरा, एक स्माइल अपने चेहरे पे रखना, वो आप कैसे रखते हो? ओवर टू यू निम. Okay, so see, the situations jaise bhi ho, I said, I mean, you are not able to control external, but the best gift what you have or I have, I would say, that is, the way I am, so I consider myself as a gift. And so what do you do with a gift? When you get a gift, you share it with others. So मेरी gift है मेरी smile. So that's why I'm sharing my gift to everyone. Sweet. God bless you. You have a very passionate and compassionate smile. Great. Good to see you live. I mean, since LinkedIn पे देखने से तो नहीं समझ में आता, but live पे देखने के पता चल रहा है. You're great personality. Awesome. Nimi, let's go to the next question, right? अब आप बताइए कि HR, अगर कोई बोले कि मुझे HR बनना है, right? पर उसे क्लैरिटी नहीं है, मुझे नहीं समझ में आते लोग, मुझे नहीं समझ में आती उनकी बातें, और मैं अपने को ही नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं लोगों को कैसे समझूंगा? ये एक बहुत जेनरिक क्वेश्चन होता है टू ऑल दी HR, और उनको ये भी मन में लगता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, मतलब मेरे एक्शन से किसी का नुकसान हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, वो ना हो. तो ये जो मन का वहम है, जो भी आप बोले, मन में जो ऐसी बातें आ जाती है, उसको ओवरकम कैसे करें? जैसे आपने अभी बोला कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, आप क्या कर रहे हो, राइट? पर मन में फिर भी आ जाता है यंगस्टर्स को, क्योंकि होता है हमारा 20 साल काम का, तो अगर मुझे CHRO बनना है या HR में टॉप तक जाना है, मैं स्टार्ट तो एग्जीक्यूटिव से करूंगा, फिर मैं एसोसिएट पे जाऊंगा, सो एंड सो, पर इस जर्नी के बीच में ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसका क्या करें? ओवर टू यू निम. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीक्षा, सी जर्नी जो होती है वो कहीं से भी आपकी स्टार्ट हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि इनफैक्ट आई स्टार्टेड फ्रॉम my B school. My MBA has been from a tier 2 B school. I'm not from a top college. Okay. And when you think about any tier 2 B school, the first option or the majority of the options available to any of the HR or the most demanding is recruitment or as a recruiter. Okay. तो एज अ व्हेन वी स्टडी, हमें को ख्वाब रहता है, वी हैव अ ड्रीम, वांटेड टू बी अ CHRO, बट हमारा कॉलेज ये है, आई डोंट हैव दैट परसेंटाइल. तो दैट शुड नॉट स्टॉप यू, so that mindset. I got into recruitment. So I started into a consulting firm as a proper recruitment, जहाँ मैंने literally call किए हैं candidates को, schedule किए हैं candidates. Okay. And then I got an opportunity to work as an HR generalist, which was a mid-sized company. Then I got an opportunity to work in a startup where I have to design the policies of an HR. So that itself, as in, you are, if you want. So first is be open to what you want. Secondly, be flexible. ऐसा नहीं कि, and the best part is I told you earlier, HR, we are the learner, facilitator, and enabler.
तो ये आपको हर जगह पे मिलेगा, हर इंडस्ट्री में मिलेगा. तो you should be open to what you wanted. And next thing, when I say about being open, you should not be focusing only towards HR. That's again one thing. कि ऐसा नहीं है मुझे सिर्फ HR में ही आगे बढ़ना है. Being an HR is also the role of a collaborator. तो आपको business समझना है. You know, you have to be partner with the business, the organization leaders, and also with the technology guys, IT guys. They should be your best friend. So because we are in a digital age, so it is not that I am only going to study about recruitment, L&D, but what am I going to learn about tech saving and the business? So these are some of the things which you should keep your mindset open for learning. And third thing, as you said, feedback. तो लोग बोलेंगे कि अरे तुम्हारे तो अभी ये स्कूल में है, you have not reached up your salary, but that should not bother you because it comes up. So if you are passionate about it, you will get into what you want. It takes time, everyone has their own time, but just be true to yourself, be authentic. Wonderful, wonderful. So, like I said, the be authentic filter might work on pictures, but not on characters. Yeah, absolutely. So, Nimi, moving forward, जैसे हमारी बात हो रही थी, आपने बताया था कल्चर के रिगार्डिंग. आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसे, मतलब मुझे ऑन टॉप चाहिए, मुझे कुछ चाहिए तो अभी चाहिए, मैं लड़ जाऊंगा मर जाऊंगा पर मुझे अभी चाहिए. दे आर वेरी मच आफ्टर, लाइक दे वांट राइट नाउ. एक हमारे युवा पीढ़ी में इंटरनेट के जरिए बहुत सारी चीजें गलत फैलाई जा रही है, या जैसे बोलते हैं ना कि जल्दी सक्सेस की सीढ़ी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू वर्क हार्ड एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट, राइट? बट पीपल डोंट नो अबाउट इट. तो आपका नजरिया यूथ के प्रति क्या है, और यूथ को क्या करना चाहिए? क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ है, गलत बुरा अच्छा सही सब है, बट हम अपने आप को स्थिर रखकर किस दिशा में जाए, और कल्चर भारत के लिए और युवा के लिए कितना जरूरी है? ओवर टू यू. ओके, तो सबसे पहले तो आई वुड से कि important है to have the mindset of a startup founder. एक startup founder के mindset क्या होता है? They are passionate about it, they are a goal setter, they are determined, and obviously a hustler. So if it is not working, let's move on to something else. If not this, do next thing. तो जरूरी है कि and most important as an HR also, that it is not a though easy work. It takes a lot of work, experience, and skill set. Correct. So it is not a cakewalk, but it takes time. But if you are passionate, determined, and just have the mindset of a startup founder, that's what I have realized, and that's what I do. I keep interacting with the people. I worked in the startups I have seen, and that really helps you. It takes time, but it helps. ओके, वंडरफुल वंडरफुल. तो यहाँ पे जैसे आपने भी बताया, इट रियली हेल्प्स कि बी स्टार्टअप फाउंडर, ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप लाइक अ लिटिल बेबी, सब कुछ करके देखो, गिरो उठो बट करो जरूर. बट हाँ, यहाँ पे निमी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है, जहाँ पे हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं. भूलने का मतलब ये नहीं है हम बुक्स में पढ़ते हैं, हम फादर्स डे मदर्स डे ये सब मनाते हैं, बट हम फिर भी वैल्यूज को मिस आउट कर रहे हैं. तो वैल्यूज को एज अ स्टूडेंट, as a parent, as a teacher and as a profession, इन सारे जर्नी में कितना महत्वपूर्ण है अपने वैल्यूज और कल्चर को इंटैक्ट रखना, और कैसे रखें? ओवर टू यू. ओके, सो मुझे आई डोंट रिमेम्बर कहाँ पे कौन सा कोट है, बट आई थिंक इट्स सिमोन सिनेक, बट समवेयर आई हैव रेड about this culture part is, when people are financially invested, ठीक है, आप किसी के ऊपर, तो they expect a return. But when people are emotionally invested आप उनके ऊपर, so they want to contribute. Wow. So that's a different. तो आप कैसे contribute करोगे, and that's where our culture talks about, being a giver. So in whatever ways you can, and most important again, as an HR, I would bring on the profession, because HR is one thing where
you play a role of a learner and also an influencer. Yes. Yes. Of course, yes. You are the pillar of the company, and that makes it, or maybe that breaks it. So that's very important. Wonderful, wonderful said. आप influencer हो, influencer की जरूरत, तभी मैंने आपको बोला था निमी कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बॉलीवुड को, क्यों हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हर वो बेहतरीन एचआर स्टार को, हर वो बेहतरीन एफएम स्टार्स को जो काम तो दिन रात कर रहे हैं, बट उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनको कोई उनकी उनकी इज्जत तो अच्छी बात है, बट उन्हें कितने लोग जानते हैं। तो मेरा ये मिशन में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया निमी। आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर हियर। ओके, Thank you, Diksha, for and love your initiative, because that's very important, and especially bringing the facility management. That domain is never touched upon. I mean, hardly people know about it. So appreciate your work. थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा देश चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स ये ना बोले कि डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, और वो ये बोले एचआर भी बनो, तुम्हें जो बनना है बनो यार, पूछो मत। राइट। सो अच्छा, Yeah. इसी से एक क्वेश्चन रिलेटेड है निमी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जैसे आप खुद एक मदर का रोल प्ले कर रहे हैं, राइट, और आप समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंटहुड, एंड मॉम डैड बनना इज नॉट वेरी इजी जॉब, इट्स नॉट। मॉम इज इक्वल्स टू गॉड, हम ऐसे बोलते हैं, जैसे मेरे मॉम मेरे लिए भगवान है। तो हम ऐसे बोलते हैं, आप उनको केयर करते हो, आप उनको नरिश करते हो लाइक ए स्मॉल प्लांट, और वो बड़े बन के एक ट्री बनते हैं, और वो दूसरों को फिर नरिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना जरूरी होता है अपने माँ बाप को अपनी चीज बता। जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, राइट, मैं 18 साल की हुई, मैंने बोला मॉम मेरे को ना पेंटिंग करनी है। पेंटिंग इज नॉट, क्या बोलते हैं उसे, सराहा नहीं जाता। मैं बोलूं एचआर, मेरे को सीएचआर बनना है, बट एचआर एग्जीक्यूटिव हूं मैं आज, अरे क्या कर रही है यार, कुछ नहीं रखा इसमें। तो यहाँ पे हम अपने यूथ को, या एज अ पेरेंट भी, क्योंकि ये वीडियो पेरेंट्स भी देखेंगे, तो एज अ पेरेंट हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि पेरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चा बिगड़ ना जाए। बच्चा कहीं जा रहा है, उसको खुद नहीं पता कि पेंटिंग करे, वो म्यूजिक में जाए, डांस में जाए, अभी प्रोफेशन कैसे ले। तो एज एन एचआर आप कैसे बताओगे किसी को प्रोफेशन लेना है? बिकॉज आई थिंक एचआर इज इक्वल टू साइकोलॉजिस्ट एंड इक्वल्स टू कंसल्टेंट्स। they you know train people like how to think well and how to mold yourself in a great career profession. So over to you, Nimi, what's your take on it? Go ahead. Okay. So, the most important as a parent, what I feel is, especially what I have seen in I'm grateful for my parents, at least for giving me that opportunity, Yes. that, whatever, I mean, it's important to understand that what the child wants. So, especially, I mean, during the childhood, I had very less interest. मैं कोई भी चीज में करती हूँ, कोई भी एक्टिविटी लेती हूँ, थोड़ी देर करूंगी, एक महीना करूंगी, and then I'll switch over. Then I go into something else. Then I go into something else. So it's important, because जब तक आपका वो right click नहीं आता, the right play bell which doesn't ring, Yes. you might hop on, but it's very important, and no learning goes waste. तो मैंने वो सीखा है, and that's very important as a parent also, कि आप encourage करिए, because कुछ चीजें जो हमारी natural talent होता है, which is within us, that comes up, we don't know in what way, in what shape. तो अगर आप पेंटिंग करते हैं, अगर मैं पेंटिंग करती हूँ, अगर मेरे अंदर वो टैलेंट है, तो the way I do it, it would come up. मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, but there are certain skills which comes up. Of course, to be a great artist, I have to specialize and get into it, expertise. Similarly for singing, or similarly, for the people behavior, or something, you are good at numbers, you're good at observance, you are good at technology. तो कोई भी ऐसी चीज हो, or you are interested in giving back to community service, that is again one of the thing which is people are not looked upon. Okay, you want to work in NGO. I mean, what? So it is very important to understand कि आपको कौन सा चीज आपको अच्छी लगती है, and give them the options, because sometimes probably they didn't had much option, and हमारे future generation में there are plenty of options which we might not be aware about it. Absolutely. So it's very important which they come across, let them do it, and then they would choose their own path, because the way you get inclined towards it, as I said, passion drives purpose. So जब आप किसी चीज के लिए passionate होते हो,
आपको इसके अंदर purpose, you find out the fulfillment within you, and that's how you find your path. Wonderful, wonderful, Nimi. I think purpose filled with passion filled with purpose will lead to you the right places. Wonderful, wonderful said. Okay, that's the takeaway for the audience. All right, Nimi, moving to the next question. बहुत सटीक और बहुत right question. Maybe people might not love it, but I'm going to ask. यहाँ पे जब एक कंपनी के अंदर एक एचआर होते हैं, राइट, एंड दे मैनेज लॉट ऑफ बिग वर्कफोर्स के अंदर फ्रिक्शन आ जाती है, यार तुझे ज्यादा इंक्रीमेंट मिला, मुझे नहीं मिला, एंड लॉट मेनी फैक्टर्स, लॉट ऑफ पीपल do such ways. यहाँ पे HR say for example there are two employees, one employee got a raise by say 30% of incentive, however that goes, and दूसरे को कुछ भी नहीं मिला, nothing. So यहाँ पे अब एक HR को वो जाके बोलेगा यार तुमने बाइसनेस किया and so many factors. How important HR में qualities उस टाइम पे that ओके मेरे को गुस्सा नहीं करना, मुझे फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करना, वो मैनेज जो आप करते हो वो कैसे करते हो, एंड टू पीपल आउट देयर हु एक्चुअली लर्न फ्रॉम यू, उसके लिए क्या मैसेज है कि आप इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करें? ओवर टू यू निमी. Okay, so as I said, सबसे पहले तो it's important because you are in the profession of people. Yes. And not even a single person is, every single person is different, and at every moment of time people are different. तो सबसे पहले तो आपको वो समझना जरूरी कि that we all are unique, people are unique and every moment is different. तो कभी भी कोई भी reaction they would come up. मैं जैसे थी probably 1 hour, I'm not probably not the same way because you don't know what the mindset is. तो सबसे पहले तो just mindfulness practice is what I really follow. You know, I take out time for myself. That is, I do, as you would have seen, that self-love coach or self-care. So self-care is something which I really prioritize because until unless I don't have within, I cannot give it. So it's very important to set out a time for yourself, which you really wanted to know what you are, what you wanted to focus on, or sometimes just by doing nothing, just giving time yourself. And that helps realizing the present moments, be living in the present moment of what you are, the way you're breathing, and that's how it actually comes your mindset and yourself. That's when you are able to give it to others, and any external forces, trust me Diksha, doesn't bother you. Wow. So if employee comes in, you understand there must be something going on, you talk to them individually, understand their concerns, and then take a call accordingly. गुड. जैसे आपने बोला आप सेल्फ कोच हो, आप मोटिवेट करते हो, आप समझते हो, आप साइकोलॉजी भी समझते हो. अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों का क्वेश्चन है, but I'm going to ask that. Okay, the question is, आप as a suppose करिए मैं आपके पास आई हूँ, you are a self coach and I'm here like okay I want to meet my own self, मैं अपने आप से मिलना चाहती हूँ और मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है, मुझे समझ नहीं आता. जैसे सपोज करिए कि मैंने आपका बुक पढ़ा और बुक के अंदर मैंने सारा कुछ पॉइंटर्स पढ़ लिए कि ये मुझे करना है. मेरे अंदर जैसे हम फोन में क्या देखते हैं, बैटरी 80% है, 10%, तो मुझे पता है कि उसकी परसेंट है. मैं अपने में कैसे देखूं, एक बंदा अपने अंदर कैसे देखे कि मैं आज हाई फील कर रहा हूँ, मैं आज लो फील कर रहा हूँ, अगर मैं लो फील कर रहा हूँ तो मुझे हाई पे जाना है, ये कैसे देखे? और जब आप उस पर पहुंच जाते हो, नहीं आप अपने आप को मना लेते हो कि नहीं नहीं मैं हाई हूँ, मैं लो नहीं हूँ, फिर भी आपको अंदर लगता है यार मैं पक्का लो हूँ. तो ये जो सिचुएशन होती है इसे आप कैसे दर्शकों को बताएंगे कि वो कैसे हैंडल करें? ओवर टू यू. Okay, so सबसे important what I do is I maintain a gratitude journal. ठीक है, so that is like every day, I mean before I go to bed I just write down what I am grateful for. अब when you write down the grateful thing, अब उससे ये होता है you start looking for the things what you are positive into, right? जो भी चीजें आपके साथ अच्छी हुई है. So पहले दिन might be little difficult to understand कि यार नहीं है मेरे साथ आज अच्छा क्या हुआ. Probably you will find the list day by day, and eventually you will realize, we would realize कि you know our mind is going to the direction of जहाँ पे आप positivity attract कर रहे हो. Secondly,
whatever bad thought comes in, just write down in a piece of paper, just rough piece of paper, and just trash it. I don't say that you write it down in the diary. In the Okay. journal, you just write down the positivity. But take out any people, whatever thoughts are there, just write it down and just, trash it. So that's the second thing which I'd say, because you don't have to keep it in the diary. Hmm. Those are just goes. And the third thing, what I do is I just apply, probably I'm attracted to the fragrances. So I would just apply a fragrances and quickly it just changes my mood. Wow. Wow. The third one, I love it. Don't share. Third one, I really, really love it. Awesome. And Awesome. anything you are focused on, right, you are, because that gives you an instant positive connect, and you get, or probably if you are inclined towards anything about book, or you're passionate about reading book, because the way I do look into it, sometimes that thoughts would come in. So it's very important to keep a book or a post-it note, the affirmation, self-affirmation thoughts, a sticky fold, notes in top of your wherever which you accessible. So that's very important. ओके ओके हाँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी दफा लोग लिख लेते हैं आई एम द बेस्ट बट यही भूल जाते हैं मैंने वो नोट कहाँ रखा था एंड दे मिस्ड आउट लाइक लुकिंग एवरी डे वंडरफुल वंडरफुल